Hello friends, welcome to Kalyani IS. In the previous lecture we have studied monetary policy, functions of RBI, functions of commercial bank and financial inclusion. In this lecture we will study fiscal policy. See, as you know that for economic development and economic growth, the money supply, or we can say that liquidity, should be controlled in market. And as you know that if money supply, right, if money supply, or we can say that liquidity, if liquidity is more than required, right, if liquidity is more than required, then what will happen? It will lead to inflation, right? And as you know that when inflation increases, then fixed income category group face many challenges and many problems, right? Also, if there is a lack of liquidity and there is a lack of money supply, then what will happen, right? This will lead to, right, this will lead to disinflation, right, or we can say that recession. See, when there will be lack of money supply, then definitely the interest rate will be high, and as a result the investment, there would be a lack of investment. As a result there would be a lack of employment, and there is a less, or we can say that little, economic growth, and this will lead to economic recession or disinflation. Therefore, for having a economic development and economic growth, the money supply or liquidity should be controlled, right? And we have studied, right, monetary policy. As you know that to control the money supply or liquidity, we have studied monetary policy, right? And as you know that monetary policy is executed by the central bank of country, which is RBI in India. So in India, to control the liquidity or money supply, the monetary policy is executed by RBI. Also, there is a fiscal policy, right, which is controlled and executed by government of India to control the money supply and liquidity. And I told these things so that you could relate the monetary policy and the fiscal policy. And as you know that we have studied in depth that when the money supply or liquidity increases, what would be the outcome or what would be the consequences. Also, if there is a lack of money supply and there is a lack of liquidity, then what will be the consequences and results. We have studied in monetary policy. Therefore, in this lecture we would focus on fiscal policy, right? So we can say that fiscal policy is a set of government policies and government decisions to increase the savings and investment so that our country could achieve the national aims like reduction in income inequality, or we can say that redistribution of income, socio-economic welfare and inclusive growth aims, right? Or in other words we can say that fiscal policy is related to public income, public expenditure, public debt, right, taxation, budget deficit, right, subsidies, right, or deficit finances are called the fiscal policies. See, monetary policy is executed by the central bank or RBI, but here the fiscal policy is executed or operated by the government through the Ministry of Finance, right? Now we will understand what is the aim of fiscal policy, right? So the real goal or aim of the fiscal policy is to increase the savings and investment so that our country could achieve the national goals like redistribution of income. As you know that when some people, so as you know that when the concentration of wealth, right, कुछ लोगों के पास में
ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन संपत्ति जब उनके पास में होती है, सो उससे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, और उसको कम करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी हैपेंड, सो दैट जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कम हो सके। उसके साथ ही सोशियो इकोनॉमिक जो वेलफेयर स्कीम है वो हो सके, क्योंकि अगर समाज में इफ़ देयर इज अ economic inequality in society, then social development cannot be occur. If there is a redistribution of income and equality in income, then socio-economic welfare can happen. Also inclusive growth, right? So that every section of society, whether it is a low income category, low income category group or high income category group, or from rural area to urban area, every could include or could participate in the process of economic development, right? So this is all about the fiscal policy, right? Now here the 3 marker question can be asked. What are the components or the elements of the fiscal policy, right? You need to remember 3 marker question can be asked from the definition of fiscal policy. Also, what are the components of the fiscal policy? We will understand very comprehensively. See, the fiscal policy is controlled and operated by the government of India through budget, right? Here we will talk very comprehensively about the budget. Second, taxation. Third is public expenditure, right? See, if we take the 2 situation here, the first is inflation and second thing that deflation or recession. See, if there is a inflation, if we talk about the inflation, if there is a high inflation, at that situation what will government do? Government will reduce public expenditure. Why? See, if government and if there is a deflation or recession situation, then in this situation government will increase the public expenditure. As you know that when public expenditure would be increased, then it will create many jobs in the market. When jobs will be created, aggregate demand will increase, and that will lead to the high economic growth rate, and our country would come out the situation of the recession. For an example, corona, right? Because of the corona pandemic, our economy was hit very badly. Therefore, now this time government through Atmanirbhar Bharat, right? Self-reliant India, government is trying to increase the public expenditure, and when public expenditure will increase, then definitely many jobs would be created, right? The liquidity will increase, that will lead to the increase in employment, that will lead to aggregate demand, and that will lead to the high economic growth rate, and our country would come out of the situation of deflation and recession. So this is all about the public expenditure, right? This question can come also in the examination, right? Now we will study public debt, right? What is public debt? If government does not have enough sources to earn the money, then in this situation government take the loan from domestic market or international market. To understand the public debt, we need to clear the 2 concepts. First is crowding in, then crowding out. What are the 2 concepts you need to understand very clearly? What is crowding in? See, when government borrows from the domestic market, right? Market. See, if you need to understand here, see, this is domestic market and this is, we can say that foreign market, or we can say that from international
bodies. See, if government requires a huge amount of money, huge amount of credit, at this situation government can borrow from the domestic market, also from the foreign market, or we can say that from the international bodies like IMF, World Bank, etc. Right? But what is the difference between, see, if government borrows from the domestic market, then what will happen? The liquidity or the credit which is available at a domestic level for our domestic industries for investment, this will reduce, and as a result our domestic industries would not get enough investment, right? But if government would borrow from the foreign market, then it will definitely increase the liquidity. Therefore we say the crowding in. Why? If there is a liquidity in our domestic market, when government borrows from the domestic market, then the excess or the liquidity would go to government, and this will suck the domestic liquidity. Therefore it is known as crowding out. Whereas when government borrows from foreign market, right, foreign market, or we can say that international bodies like IMF, World Bank, then definitely fresh liquidity would be included in our market, and this will lead to crowding in. Therefore this process is known as crowding in, right? And you need to understand government always prefers crowding in process. Why? As you know that because of corona pandemic there is a lack of liquidity in our market, and as you know that if government borrow from the domestic market, then this will further reduce the liquidity from the market. Therefore government prefers to borrow from the international market so that fresh liquidity could be included in our market, and this process is done through the public debt, right? And now fifth, the different types of deficit, right? Budgetary deficit, then fiscal deficit, and as you know that these deficits are also related to public expenditure and public debt. Now we need to know why is the deficit, government required deficit. See, देखिए यहाँ पर जब गवर्नमेंट को एक तरीके से जॉब्स क्रिएशन के लिए या फिर रेसेशन से निकलने के लिए जब एक्सपेंडिचर बढ़ाना होता है, राइट, सीधी सी बात मैंने बताया कि इफ कंट्री हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड रेसेशन, देन गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द पब्लिक expenditure, and as you know that the source of income of government is limited, therefore government will take public debt, right? और सीधी सी बात है यहाँ पर when the expenditure of government is more than the income of the government, then definitely this would be a deficit, or this system is known as deficit financing, right? As you know that, अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जाननी है, वो ये है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है इट इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी, बट द फैक्ट इज़ दैट व्हेन गवर्नमेंट कई बार क्या करता है कि कई लोक लुभावन या फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट कई बार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या कई जो है लोक लुभावन जब योजनाएं लागू करती है और उसके लिए जब वो फ्रॉम फॉरेन मार्केट से ह्यूज डेट लेती है, तो यही फिर हमारे देश के लिए एक समस्या भी बन जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इफ बी बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ लायबिलिटी एंड गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, एंड कई बार ये जो डेट है इतना बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को ब्याज देने के लिए पुनः फिर से क्या करता है, लोन लेना पड़ता है। इसीलिए जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी, बट व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। बट इफ जो डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम है
वो गवर्नमेंट एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या फिर लोक लुभावन जो है पॉलिसीज हैं उनके लिए ये व्यवस्था लागू कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर इकोनॉमी एंड फॉर आवर country. So this was all about public expenditure, public debt and different types of deficit. We will study in next lecture about the taxation, and in this lecture we will study about the budget also. But before studying the budget, we will also study the importance of fiscal policy. See, a 5-marker question can be asked from the asked in the mains examination that what is the importance of fiscal policy, and we can answer in this way. The first importance is there's inflation control, right? When there is a high inflation in the market, then government can increase in taxes, right? And when the taxes would be increased, it will decrease in the disposable income, and this will result in decrease in demand, and when there would be a decrease in demand, then definitely we would be able to control the inflation, right? What is the second? Deflation control, right? Deflation control. See, when there is a situation of deflation, or we can say that recession, right? As you know that because of corona pandemic, there is a recession or economic crisis at the present times, and to come out of from the situation of recession crisis, or we can say that to fight the deflation, government decreases in taxes. When taxes would be reduced, then the disposable income would increase. This will lead to increase in aggregate demand, and when aggregate demand will increase, then definitely we would be able to control the deflation, or we can say that our country would be able to come out from the situation of recession or economic crisis. Third is promote economic development. See, government provides many income tax benefits on household saving and insurance. See, if you purchase mutual fund, and if you will invest in if you will purchase mutual fund and life insurance, then definitely you will have to pay less amount of tax, and through this scheme, or we can say that through the tax benefit scheme, right? Through the tax benefit scheme, government tries to increase the household saving, and this will result in industries will get more capital for investment, and when our local industries would get huge amount of investment, this will lead to the high economic growth rate, employment also increase in GDP. If you will ask me, sir, what is the biggest importance of fiscal policy, then this is the fourth point. This is the most IMP. I think that this is the 4-star, right? Inclusive development. Inclusive development is the biggest aim, or we can say that importance of the fiscal policy. As you know that if there is a capitalist economy, then therefore all policies and decisions would be taken for the self-interest, and this will lead to economic inequality. And as you know that when economic equality increases, this leads to class struggle. See, as you know that when inequality will increase, then definitely many problems would be faced by everybody in our country. Therefore, to fight for the redistribution of income, or to control the inequality, the inclusive development is the most important thing which government need to follow. And in this situation, what government does here, right? See, government takes high taxes on the rich and rich companies, right? So
जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिच पीपल हैं और जिनके पास में मोर देन जो है मोर देन रिक्वायर्ड मनी है, उनसे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिक वेल्थ है वो रिच पीपल से टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट ले लेगी और उस वेल्थ को फिर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या करेगी, खर्च करेगी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिच पीपल से या जो बड़ी बिग इंडस्ट्रीज हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लिवाई करेगी और उससे जो इनकम होगी उसको हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च करके पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या करेगी, प्रोग्राम्स रन करेगी। सो दिस इज द बिगेस्ट or we can say that the most important importance of the fiscal policy. Next is balanced development of all regions, right? All regions, or we can say that all regions or areas. As you know that the economic growth or economic development does not occur in every region or every area of country. In our country many regions, for an example if we talk about in India, then northeast, see there is a lack of economic growth and economic development in northeastern states or least development areas or territories, also Naxal affected areas or many other underdeveloped areas. Here government would provide tax exemptions or we can say that government would provide tax benefits so that the development process could be completed here, right? Next is exchange rate stability, right? See, government can levy huge taxes for import, right? Or government can promote export by providing tax exemptions to exporters, right? और जब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे जब कम टैक्स लेगा तो हमारे देश की जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं दे वुड बी, वो एक तरीके से टैक्स बढ़ाने के लिए क्या होंगी, प्रमोटेड होंगी और वहीं पर जो भी आइटम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट विल levy huge taxes on imports and this will result to the less amount of the import and as a result जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो भी क्या होगी, एक तरीके से स्टेबल रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। और अगर हमारी एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रहती है तो दिस विल improve our foreign trade, right? Next we will study types of fiscal policy. This is also most important and a 5 marker question can be asked from this topic. See, if we talk about the fiscal policy, then mainly there are two types of fiscal policies. First is expansionary fiscal policy, then contractionary fiscal policy. See, when government adopts the expansionary or contractionary policy, see, if there is a high inflation in our country, it means that there is a high amount of liquidity or there is a surplus liquidity in our market. At this situation government will increase taxes. When government will increase taxes, this is the first thing. Second, also government reduce the public expenditure. When government will reduce the public expenditure and increase taxes, as a result what will happen, decrease in investment, decrease in consumption and decrease in demand. And when there is a decrease in demand, our country would come out of the situation of inflation, right? So to fight the inflation, government adopts the contractionary fiscal policy. And there is another situation when there is a disinflation, or we can say that the recession situation. As you know that because of the corona pandemic,
the economic crisis or economic recession and deflation, when the recession and deflation, उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्सेस। और मैंने बताया था कि जब टैक्स रिड्यूस होंगे तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, बढ़ेगी, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ये तो हो जाएगा पहला कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। दूसरा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सीधी सी बात है जब टैक्स रिड्यूस होंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे जो इन्वेस्टमेंट है या कंजप्शन है या फिर हम कहें कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइट। और एज अ रिजल्ट आवर कंट्री वुड बी एबल टू फाइट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और इकोनॉमी will come out of the situation of recession or economic crisis, right? So this was all about the fiscal policy. We studied the definition, right? Then the components and elements of the fiscal policy. Then we studied the types of fiscal policy. We also studied the importance of fiscal policy, right? Now we will study the most important component, which is budget. Right, as you know that if you have understood the budget very comprehensively, then definitely you will be able to understand the fiscal policy, right? So at first we will study the budget. See, what is budget? In our constitution the budget word is not mentioned. Actually the budget is in the form of annual financial statement is mentioned. What is budget? See, budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the government in respective financial year, right? Whatever the government receives and whatever government expenses, the estimate of the receipts and expenditure is called the budget here. See, the budget word was derived from the French word budget, which means that a लेदर बैग। तो यहाँ पर जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेदर बैग। और वास्तविकता में क्या है, बजट एक एस्टिमेट है जो कि रिसीव्स और किसका, एक्सपेंडिचर का होता है। इफ वी टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, देन द बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1110 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, or we can say that the president shall cause to be led in both the houses of parliament for each financial year a statement of the estimated receipts and estimated expenditure of the government for that year, and which would be called as annual financial statement, and this is written in article 1112, and this is known as budget, right? And if we talk about the state, तो यहाँ पर राज्यों के लिए जो annual financial statement है उसका वर्णन आर्टिकल 202 में किया गया है, right? अगर हम बजट से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें तो द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, right, on February 8, 1860. Therefore, James Wilson is called as the founder of the Indian budget. See, before independence, an interim government was formed consisting of Muslim League and Congress, right? And at that time, Liaquat Ali was the finance minister. So, interim budget was presented by Liaquat Ali before the independence, but when our country got independence, then the first finance minister became Shanmukham Chetty, and Shanmukham Chetty was the first finance minister of independent India, which presented the budget on 26 November 1947, right? And अगर हम देखें तो पहले जो था इनिशियली तौर पर जो हमारा बजट होता था और रेलवे बजट होता था वो एक साथ जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था, राइट। बट जो है विलियम ऑकवर्ड की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई थी जिसको क्या कहा गया, विलियम एकवर्थ कमेटी, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विलियम एकवर्थ कमेटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920, राइट। तो विलियम एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के बाद से 1924 के बाद से द जनरल बजट एंड द रेलवे बजट, राइट, द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट वाज separated from the 1924 and till 2017. After 92 years, how much? After 92 years, the Arun Jaitley, the then finance minister, also the then finance minister, उसके बाद में 2017 से पुनः जो है अब जो है रेलवे बजट along the general budget would be presented, राइट। तो पहली चीज ये है कि 1924 से जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, बट 2017 के बाद से द जनरल बजट वुड बी प्रेजेंटेड along with the railway budget. Also there is a little bit change, which is now the budget would be presented in the first week of February, right. Next is the budget for the 1920 was named as वही खाता और वही अकाउंट हो जाएगा। इसके साथ ही जो कन्वेंशनल तरीके से जो बजट था वो एक ब्रीफ केस में या सूट केस में रखकर प्रस्तुत किया जाता था, बट आर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेड क्लॉथ, राइट। तो रेड क्लॉथ में जो है पहली बार निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। अब हम यहाँ पर बजट के बारे में समझेंगे। एक्चुअली बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट की कुल रिसीव्स होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, बजटरी इनकम कहते हैं, और गवर्नमेंट का जो कुल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब कई बार हमने अभी जो है फिस्कल पॉलिसी में जिक्र किया था कि जो टोटल पब्लिक इनकम या गवर्नमेंट को टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल पब्लिक इनकम आल्सो मीन्स बजटरी इनकम, और टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर विच आल्सो मीन्स बजटरी एक्सपेंडिचर। अब जो बजटरी इनकम है दिस इज आल्सो ऑफ टू टाइप। First is revenue receipts and second is capital receipts. वही जो expenditure है it is also of two type, revenue expenditure and capital expenditure. In the mains examination 3 marker question from the each topic can be asked in the examination. So now we will discuss one by one. At first we will study the revenue receipts. See, what is the revenue receipts? See, the revenue receipts are receipts which are not refundable. गवर्नमेंट को दोबारा उसको रिफंड करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जब सरकार विदेशों से ऋण लेती है तो गवर्नमेंट हैज़ टू पे बैक, बट जो रेवेन्यू रिसीप्ट होता है जैसे सरकार को जो टैक्स मिलता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स विच आर नॉन रिफंडेबल। सेकेंड थिंग इज दैट रेवेन्यू रिसीप्ट डज नॉट क्रिएट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और वी कैन से दैट लायबिलिटीज, right? See, when government borrows from international market and national market, this will lead to creation of liability for the government. But if government in revenue receipt, this does not create financial liabilities. Also here, revenue receipts do not create wealth or we can say that assets, right? Also, revenue receipts are recurring income, right? आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ये जो इनकम है ये होती रहती है। तो आपको ये चीज़ें 4 याद रखनी है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर नॉन रिफंडेबल, राइट, डू नॉट क्रिएट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, डू नॉट क्रिएट असेट्स एंड आल्सो रिकरिंग इन नेचर।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, टैक्स के माध्यम से एवं नॉन टैक्स के माध्यम से। अगर हम सीधी सी बात को इसको समझें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण, अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे की जो टिकट है, रेलवे का जो फेयर है या टिकट है या रेंट है, गवर्नमेंट कोई भी बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है या रेलवे का जो किराया है उससे जो इनकम प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करे कि इकट्ठा रेलवे को ही बेच दे, राइट, प्लेटफॉर्म को ही बेच दिया या हॉस्पिटल को ही बेच दिया, प्राइवेट जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, टैक्स रिसीप्ट्स और क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, राइट। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, द रिसीप्ट्स व्हिच कम फ्रॉम द टैक्स आर कॉल्ड एज टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राइट, एंड द रिसीप्ट्स व्हिच आर फ्रॉम द नॉन टैक्स, these are called non-tax revenue receipts. See, government get the receipts through direct tax. For an example here direct tax जैसे यहाँ पर हो जाएगा इनकम टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स हो जाएगा, एंड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जो जीएसटी है या एक्साइज टैक्स है, इसके माध्यम से सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राइट। अब हो जाएगा अगला, गवर्नमेंट को कई अन्य सोर्सेज से नॉन टैक्स रिसीप्ट्स भी प्राप्त होती हैं, जैसे पहला हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीप्ट। फॉर एन एग्जांपल दैट गवर्नमेंट हैज़ लैंडेड मनी टू एनी इंडस्ट्री और एनी फॉरेन कंट्री, तो गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो है एक तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। वहीं गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है, किसका प्रॉफिट होता है, एज यू नो दैट गवर्नमेंट हैज़ ओनरशिप ऑफ मैनी पब्लिक अंडरटेकिंग लाइक वेल, LIC, राइट, सेल। जब ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है प्रॉफिट करती हैं तो उस प्रॉफिट से जो इनकम होगी, वो जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। इसके साथ ही इफ़ गवर्नमेंट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट मार्केट, देन उस जो इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड्स मिलेगा वो भी क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। देन गवर्नमेंट चार्जेस मैनी फीस। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन कार्ड चाहिए या फिर कोई भी चाहिए तो आपको उसके लिए फ़ी जो पे करनी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो भी क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट अप्लाइज फाइन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे तो आपको जो ट्रैफिक पेनाल्टी है वो आपसे ली जाएगी, या जो टैक्स ड्यू फीस है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में आएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंटिंग से, मिंटिंग से, राइट, इनसे जो भी इनकम प्राप्त होती है वह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। फिर गवर्नमेंट को जो गिफ्ट मिलते हैं या फिर यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल कैलामिटी, राइट, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी, या फिर अन्य किसी वजह से गवर्नमेंट को जो विदेशी कंट्री या विदेशी इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स देते हैं या जो गिफ्ट्स देते हैं वह भी क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स का सीधा का जो उल्टा होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। See, as you know that, at first I would like to tell you that what are the capital receipts. See, capital receipts are those receipts which create liability. This is the first thing, which liabilities, right? So capital receipts are the receipts which create liability. Also they create the assets and non recurring in nature. So
the assets which create liabilities, create assets and are non-recurring in nature as known as capital receipts, right? और कैपिटल रिसीव के सोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिकवरी ऑफ लोन, राइट? सबसे पहला हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है, व्हेन गवर्नमेंट recovers the loan then it would be a capital receipt. Second, borrowing, right? As I told you that government borrows from the national market and the international market also, right? Government borrows from the domestic source and foreign source. When government borrows from the foreign source like World Bank, IMF, right? This is here IMF, right? Friendly countries or other like Asian Development Bank, right? SAARC Bank, then this would be called as what I told you, crowding in, right? And when government borrows from the domestic market through securities, government securities, then this process would be known as crowding out. So government, when government borrows, the receipts would be called as the revenue capital receipts. See, so when government borrows from the domestic market and international market, the receipt would be capital receipt. And third, other receipt also, which is disinvestment. For an example, that if government has 100% ownership of a whale, right, VHEL, or any other public undertakings, when government sells the ownership or government sells the share of public undertaking, then this would be as a disinvestment. और disinvestment से जो रिसिप्ट प्राप्त होंगी उनको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे. वैसे ही गवर्नमेंट को जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट या फिर स्मॉल सेविंग डिपॉजिट या पेंशन फंड डिपॉजिट से जो रिसिप्ट प्राप्त होती है वह क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, राइट? तो हम यहाँ पर जो है अभी तक बजटरी इनकम को हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इज बजटरी एक्सपेंडिचर या टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर. एट फर्स्ट वी नीड टू क्लियर what is the total public expenditure or why government expense, right? See, for the establishment of the social welfare state, या जिसको हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए तथा कलेक्टिव जो है कलेक्टिव सोशल नीड्स की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट जो है खर्च करती है. जैसे गवर्नमेंट बिल्ड्स hospitals, schools, ports and roads also. So all the expenditure for the public welfare, or we can say that collective social needs, would be called as total public expenditure, right? अब हम यहाँ पर अगर ये 3 नंबर में पूछा जाता है तो we have 2 beautiful facts. First is that since independence till 1986-87, the public expenditure was divided into developmental and non-developmental expenditure, right? या हम सीधा सीधा इसको कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के लिए था was known as developmental expenditure, and जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए सैलरी देना होता था या गवर्नमेंट रन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता था that was known as non-developmental expenditure. फिर 1986-87 से लेकर 2017-18 2017-18 तक जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था उसको किस रूप में? एक हो जाएगा प्लान्ड, राइट? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो 1986-87 के बाद में एंड बिफोर 2017-18 द पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज डिवाइडेड एज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और वी कैन से दैट डेवलपमेंटल और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. बट एट द प्रेजेंट टाइम द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड
between revenue expenditure and capital expenditure, so that we could understand the nature and the importance of total public expenditure, right? So as you know that the budgetary expenditure or the total public expenditure is of two types. First is revenue expenditure and second is capital expenditure. यहाँ पर भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द expenditure incurred to run the government, or we can say that to keep the production process running, right? So ऐसा expenditure जो कि गवर्नमेंट रन करने के लिए और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, that is known as revenue expenditure, and also this is of consumption nature. कहने का मतलब ये है कि इससे किसी भी असेट का क्रिएशन नहीं होता है. तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दैट डज नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ असेट्स, आल्सो दिस डज नॉट रिड्यूस द लायबिलिटीज, और वी कैन से दैट देयरफॉर इट इज ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचर एंड इट इज नॉट विजिबल इन द सेंस, जैसे अगर गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों कर्मचारियों को सैलरी पे कर रही, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है. लेकिन इफ गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड अ नेशनल हाईवे और पोर्ट, देन दिस इज विजिबल. यू कैन सी दैट ओ दिस हॉस्पिटल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट. देयरफॉर वी से दैट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट विजिबल. And at last, this is recurring expenditure. For an example, that to run the government need to expenditure every year. Therefore, it is recurring expenses or recurring in nature. And what are these? Are the different expenditure, then interest payment, then subsidy, then grant to the state, then expenditure on health services, or we can say that expenditure on general services, whether it is police, public administration, और we can say that यहाँ पर गवर्नमेंट रन करने के लिए जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी, उनको एक तरीके से सैलरी और जो अलाउंस पर जो भी एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? नाउ वी विल स्टडी कैपिटल एक्सपेंडिचर. सी व्हाट इज capital expenditure? See here, if we talk about the capital expenditure, see capital expenditure is the expenditure this leads to the creation of asset, such as if government has constructed any hospital, any school, then the asset would be created. So the capital expenditure leads to the creation of asset. Also, this leads to the reduction in financial liabilities also. And third is this is not recurring expenditure, right? For an example, investment, then loan payment. गवर्नमेंट अगर अपना लोन पे कर देगी तो जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, राइट? वैसे लोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और हम भी कैसे कर सकते हैं इक्विपमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस तरीके का होगा? यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि अगर सरकार भवन बनवा लेगी, कोई भी मशीनरी बनवा लेगी, तो वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट? सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ बजट. सी वी विल स्टडी द लाइन आइटम बजट, performance budget, outcome budget, zero budget, and gender budgeting. So let's see one by one. The first is the line item budget. See, in line item budget, the expenditure is listed according to its objectives and or similar items in relation to the budgeting method. This is the most IMP for this budget. See, so in this the expenditure is listed according to its objectives
और सिमिलर आइटम्स इन रिलेशन टू द बजटिंग मेथड। यहाँ पर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एक तरीके से बिजनेस स्टेटमेंट आइटम्स को उनको क्या किया जाता है, ग्रुप्ड किया जाता है, राइट, बाय डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। फिर उसके बाद में कंपैरिजन होता है जो कि फाइनेंशियल डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पास्ट अकाउंटिंग और बजटिंग सिस्टम periods and the estimated figures in relation to the current and future periods are shown। तो यहाँ पर जितना भी जो है एक्सपेंडिचर, वो डिपार्टमेंट का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है वो उस पर डिस्कस किया जाता है और फिर इसको तैयार किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बजट में जो है एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टेड बट the sub-categorization of items is not done। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन के लिए कुछ भी अमाउंट निर्धारित हुआ है तो फिर उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हायर एजुकेशन के लिए या मिडिल एजुकेशन के लिए या फिर जो है चाइल्ड एजुकेशन के लिए इतना जो है अमाउंट खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या अचीवमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल यूनिट्स की, उसकी जानकारी देने में कैपेबल नहीं होता है। इसीलिए फिर कौन सा बजट लाया गया, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट, और जो परफॉर्मेंस बजट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduced in the financial year 1975-76. So the performance budget was introduced in 1975-76. इस बजट में क्या होता है कि इस बजट में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्लियरली मेंशन किया जाता है। इसके साथ ही इस बजट में जो गोल्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के या जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको इस बजट के माध्यम से कैसे पूरा किया जाएगा या फिर जो फंड्स स्पेंड होंगे वो एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिजल्ट्स या उनसे जो आउटकम होंगे वो किस प्रकार होगा, ये भी इसमें क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। इसका मतलब ये था कि जो पहला जो था लाइन बजट था, द लाइन आइटम बजट, इसमें केवल एवं कॉस्ट थी लेकिन इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं था। लेकिन जो परफॉर्मेंस बजट होता है ये पूरा का पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये न केवल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताएगा बल्कि इन दिस हाउ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वुड बी फुलफिल्ड दैट विल आल्सो मेंशन्ड इन दिस बजट। इसीलिए जो परफॉर्मेंस बजट होता है ये सिस्टम है किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ टैक्स, प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस यूनिट्स विद द एम ऑफ रिवीलिंग स्टेट आउटपुट और कॉस्ट। तो एक तरीके से जो परफॉर्मेंस बजट होता है उसमें कॉस्ट कितनी होगी और उसका आउटपुट कितना होगा ये पूरा का पूरा इसमें मेंशन मिल जाता है, राइट। अब है इसके बाद में आउटकम बजट, राइट। आउटकम बजट इज अ बजट in which the results of various developmental programs or organizations or departments of the government are presented। यहाँ पर जो था गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये भी बताया जाता था कि उनको कैसे ये गोल्स एवं ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव किए जाएंगे। लेकिन आउटकम बजट में सीधा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जो भी आउटकम होता है उसको इसमें प्रेजेंट किया जाता है। जो आउटकम बजट था द फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 25 अगस्त इन 2005। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है परफॉर्मेंस से बजट से ही क्या है, मिलता जुलता है। इसीलिए बाद में 2007-8 के बाद में जो आउटकम बजट है और परफॉर्मेंस बजट है उसको एक तरीके से एक साथ ही अब रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दोनों में अंतर केवल इतना, आउटकम बजट में केवल और केवल आउटकम को बताया जाता है और परफॉर्मेंस बजट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हाउ टू
achieve these goals and objectives are also mentioned in the performance budget. Right? Now zero based budgeting. See, you need to understand what happens when certain amount, see, in budget, if certain amount is fixed for a particular department, right, or we can say that department organization, then the department has to spend this amount of money within a period. But what if the department could not spend this amount of money, or we can say that the department spend in we can say that एक तरीके से जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं थी वहाँ पर भी क्या कर लिया, रिक्वायर्ड कर लिया. तो कई बार क्या होता है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी होता है कई बार उसका मिसयूज होता है. इसको रोकने के लिए जो जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट लाया गया है. राइट? और ये जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1987-88. अंडर दिस budgeting the method cycle starts from the zero. कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2020-21 के लिए 50 किलोमीटर सड़क के लिए 500 करोड़ जो रुपया है वो अलॉट हुआ है. राइट? बट एक साल में केवल 30 किलोमीटर की सड़क बनी है और 200 करोड़ जो रुपए हैं वो ही खर्च हो पाए. अब अगर ये 200 करोड़ रुपए ये हाईवे अथॉरिटी के पास रहेंगे तो हो सकता है द हाईवे अथॉरिटी कैन मिसयूज इट, और हो सकता है उसका उतना इफेक्टिवली एक्सपेंड ना हो. इसीलिए क्या होगा कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी है ये इससे क्या होगा, वापस ले लिया जाएगा और अगले साल मतलब 2021-22 के लिए पुनः जो 20 किलोमीटर की जो सड़क बची है उसके लिए जीरो बेस जो साइकिल है उस आधार पर फिर से क्या होगा, अलॉटमेंट होगा. कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो जितनी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर साल उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको जीरो मानकर उनके लिए क्या होंगे, फंड अलॉट होंगे. इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अतिरिक्त मनी है या जो रिमेनिंग मनी है उसका मिसयूज नहीं होगा. इसके साथ ही यहाँ पर अगले साल उस पॉलिसी को या उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जब पुनः जीरो बेस उसकी बजटिंग होगी तो सर्टेन डिपार्टमेंट हैव टू प्रेजेंट द लॉजिक of its productivity, utility, expenditure before the public expenditure take place in the next year. तो एक तरीके से हम यहाँ पर निगरानी भी रख सकते हैं और जो मिसयूज है वो भी रुक सकता है. नेक्स्ट इज जेंडर बजटिंग. एज यू नो दैट जो है बजट में एक तरीके से बजट इज द एस्टिमेट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बट हमें बजट में ये नहीं पता होता है कि इसका कितना पोर्शन जो है जेंडर स्पेशली वुमेन पर या मेन पर जो है खर्च किया जाता है. अगर हमें यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है या इफ़ वी वांट दैट एवरी जेंडर ऑफ आवर कंट्री वेदर इट इज़ मेल और फीमेल और चाइल्ड could develop accordingly, then we need to also mention the budget on gender basis. See, अगर हम बात करते हैं तो द जेंडर बजट वाज इंट्रोड्यूस इंडिया इन 2005-2006 बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1982. जेंडर बजट, if we talk about the gender budget, then gender budget is a budget which allocates the resources and tasks on the basis of gender is called the gender budget estimate. राइट? अगर एक तरीके से अगर हम देखें तो जो जेंडर बजटिंग रिफर्स टू सच अ बजट थ्रू विच द फंड्स आर अलोकेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स by understanding men and women in the society so that the gender equality could be established by bringing change in the patterns of the society.
right? So this was all about the gender budget. So in the next lecture we will meet with a new topic. Till then, thank you.